Hello everyone, welcome to my channel again. So in this video, we are going to discuss chapter integers, class 7th NCERT book, chapter number 1, exercise 1.1 as well as 1.2 exercise. So let's have a look now. Exercise 1.1. Let's see question number 1 over here. Following number line shows the temperature in degrees Celsius at different places on a particular day. So we are having a number line over here in which we are having the places and the temperature. These are the temperatures basically which is shown over here. So what we have to do in the first part, observe this number line and write the temperature of the places marked on it. Whatever places are marked like this place, this one, this one. So we have to tell the temperature of these places, of these 5 places. So let's talk about the first one, Laos PT. So if you just check out, it's -5, then it would be -6, -7, -8, -9, and -10. So this Laos PT is -8 degrees Celsius. Now Srinagar, similarly, from 0 we will move this way towards the left side. So -1, -2. So Srinagar is -2. Shimla is 5. Ooty 10, 11, 12, 13, 14. So it would be 14. And then Bangalore. So this is 20 and this would be 21 and 22. So this would be 22 degrees Celsius. So this is about the A part, temperature of the places marked on it. Now the B part is what is temperature difference between the hottest and the coldest places among the above. Means you have to find the difference, means you have to subtract. What you have to subtract? The hottest place temperature as well as the coldest place temperature. So first of all, you will write the temperature of the hottest place. So how you will write? Temperature of hottest place is equals to. So if you just check out the temperatures over here, so the hottest one is this. And then you will write temperature of the coldest place. So coldest is this Laos baby. So temperature of hottest place equals to 22 degrees Celsius. Temperature of coldest place equals to -8 degrees Celsius. Now you will write temperature difference equals to 22 minus -8. Why 2 times minus is coming? Because this is the temperature of the hottest one and -8 is the temperature of the coldest one, and we have to subtract both. That's why it's written minus in between. Now when you will solve it, it would be 22 plus 8 and that would give you the answer 30 degrees Celsius because they are asking temperature. All right, let's see C part now. We have to find out the temperature difference between Laos PT and Srinagar. So Laos PT, we know this is -8 and Srinagar, we know this is -2 degrees Celsius. So what we have to do, we'll write like temperature at Laos PT equals to -8 degrees Celsius and temperature at Srinagar equals to -2 degrees Celsius. And then you will find out the temperature difference. So the temperature difference between both would be -2 minus -8. So why we are putting two negative signs here? Because -2 is the temperature at Srinagar and -8 is the temperature at Laos PT, and we are subtracting it. We are finding the difference. So it would be -2 plus 8, that is 6 degrees Celsius is the answer. Now D part, can we say temperature of Srinagar and Shimla? So temperature at Srinagar and Shimla taken together. Okay, so they are saying taken together means the addition of both. So let's find out the temperature of Srinagar and Shimla first of all. So you'll write this line, temperature of Srinagar and Shimla equals to, Srinagar is -2 and Shimla is 5. So -2 plus 5, that is 3 degrees Celsius. This is temperature of Srinagar and Shimla taken together. Now is less than, that means they are comparing between two temperatures. Which temperature they are comparing is less than the temperature at Shimla. So now you will write temperature at Shimla equals to. So temperature at Shimla is 5. So what they are asking, is this temperature less than this Shimla temperature? Yes, it is less than, because Shimla temperature is 5 and the temperature of Srinagar and Shimla taken together is 3 degrees Celsius. So that means this temperature is less than this. So what we'll write, yes, the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. Now the next part is it also less than the temperature at Srinagar? क्या ये 3 डिग्री जो है श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? So Srinagar temperature is how much? This is -2 degrees Celsius. तो क्या ये 3 डिग्री श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है? नहीं.
It's more than that, right? So what we will write in this case? No, it is not less than the temperature at Srinagar because this is greater. So this is about question number 1. Let's switch to question number 2 from here. Question number 2. Let's see. In a quiz, positive marks are given for correct answers. Means if your answer is correct, you will get positive marks. That means plus in a positive way. Means suppose you're attempting a test, giving a test of 10 questions and your 5 questions are correct. So you will score marks related to those 5 questions. Okay. That means the marks were given in a positive way for a correct answer. And negative marks are given for incorrect. So out of 10, you are attempting 5 questions correctly. So you will get marks of 5 correct questions, as well as the marks would get deducted also for the incorrect answers. So that is the negative marks basically. So you will get marks for correct answers and your marks would get deducted for the incorrect answers. So negative marks for incorrect. So for correct, it is plus. For incorrect, it is minus. Now, if Jack's score in 5 successive rounds means एक के बाद एक राउंड वे क्विज हुआ है, तो पहले एक राउंड हो गया क्विज का, फिर तुरंत दूसरा राउंड हुआ, इस तरह से successive means continuously way में. So if Jack's score in 5 successive rounds were this and this. So 5 rounds का score is given. What we have to find out what was his total at the end. So we have to find the total. So Jack's score in what you will write, Jack's scores in 5 successive rounds are 25, minus 5, minus 10, 15 and 10. Then you will write total of his scores. Total of his scores equals to, now you will add 25 plus minus 5 plus minus 10 plus 15 plus 10. So what you will do now here, if you check out, 25 is a positive number. So I'll just write over here 25. Now plus minus is minus, minus 5, again plus minus is minus, minus 10, plus 15 plus 10. Now what we will do, we will check out the positive numbers here. So if you check, the positive numbers are this 25, 15 and 10. So we will add these three. So we'll write these three numbers together. 25 plus 15 plus 10, and the negative numbers are remaining 2. So we'll write them together. Now we'll add these three numbers first of all because they are positive. So 25 plus 15 is 40 and plus 10 is 50. Now we will add the remaining two numbers, the negative numbers. Why we are adding? Because minus 5, minus 10. Two same sign, if it is there in integers, then we have to add the numbers. So minus 5 minus 10 would be minus 15. Now 50 minus 15 would be, how much it would be? Yes, 35 degree. Sorry, 35 answer you will get, like the Jack score would be 35. So this is the answer of question number 2. Let's switch to question number 3. At Srinagar, temperature was minus 5 degree Celsius on Monday. So Monday को श्रीनगर पे temperature दिया हुआ है minus 5 degree Celsius. And then it dropped. Dropped means कम हो जाना. Then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. तो Monday को इतना temperature है, Tuesday को 2 degree कम हो गया है. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? तो Tuesday को क्या temperature है? Tuesday को temperature होगा, Monday को जो भी temperature है उसमें से 2 degree minus कर देंगे because it's getting dropped. Okay, so what you will write here? First of all, we'll write the temperature on Monday. So we'll write like temperature at Srinagar on Monday. Temperature at Srinagar on Monday equals to minus 5 degrees Celsius. Then we will write temperature dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. Now, temperature of Srinagar on Tuesday equals to minus 5 minus 2. Why we are doing this? Minus 5 is the temperature on Monday and it's dropped by. Okay? Dropped means minus 2. So it is minus 7 degrees Celsius. So this is the answer of temperature of Srinagar on Tuesday. So write properly step by step. So whatever I'm saying, like temperature at Srinagar on Monday equals to minus 5 degrees Celsius. Temperature dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. So temperature of Srinagar on Tuesday equals to minus 5 minus 2, that is minus 7 degrees Celsius. Now on Wednesday,
it rose by 4 degree. Rose means it's getting high. Okay, so ट्यूसडे को टेम्परेचर अब हो गया -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे को जो है वो 4 डिग्री बढ़ गया. So वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या होगा? What you will write? Now the temperature rose by 4 degrees Celsius on Wednesday. This line you will add, and after that you will write temperature on Wednesday equals to, temperature on Wednesday equals to how much? -7 was on Tuesday and it rose by, so +4. So this would be -3 degree Celsius. So temperature on Wednesday is -3 degree Celsius. So this way you are going to solve. Now let's move to the next question. A plane is flying at the height of 5,000 meters. If you are observing this figure, there is a plane which is flying at the height of 5,000 meters. So this height is 5,000 meters basically above the sea level. So this is our sea level, and above the sea level at at the distance of 5,000 meter, a plane is flying. Now after that, at a particular point, it is exactly above a submarine. So एक ऐसा point है जिसमें ये submarine के just ऊपर है plane. सबमरीन के जस्ट एग्जैक्टली ऊपर है. कब? इट इज एक्जैक्टली अबव सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. तो सबमरीन जो है वो सी लेवल के नीचे 1200 मीटर नीचे जो है वो फ्लोट कर रही है. नाउ व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो दोनों के बीच में मींस प्लेन और ये सबमरीन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो ये हमारा चैप्टर है इंटीजर्स. तो आपको इंटीजर्स में पता है जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि जब हम लिफ्ट में जाते हैं तो हम अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो हम +1 को दबाते हैं, राइट. और हमें अगर ग्राउंड लेवल से नीचे जाना है बेसमेंट में हम तो माइनस को दबाते हैं. तो जब हमें अप जाना है दैट मीन्स वी आर यूजिंग द पॉजिटिव नंबर, और जब हमें नीचे आना है दैट मीन्स वी आर यूजिंग द नेगेटिव नंबर. सो इस केस में आप अगर देखें या पिक्चर में तो ये प्लेन जो है अबव सी लेवल है दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव, और ये सबमरीन जो है बिलो सी लेवल है दैट मीन्स इट्स नेगेटिव. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे टेम्परेचर ऑन दिस डे? 5000 माइनस -1200. ये क्यों किया? क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस अगर आप चेक करें तो वो टोटल डिस्टेंस होगा. तो 5000 अगर आप ऐसे कर देते हैं इसको तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो आंसर वो नहीं आएगा, राइट. तो ये नेगेटिव नंबर का जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है. ओके, सो 5000. सो व्हाट यू विल राइट द लाइंस लाइक lines should depend upon like this. Plane flying at the height of 5,000 meter above the sea level. This line you will write. Then after that, submarine floating 1200 meter below the sea level. After that, you will write vertical distance between them equals to 5,000 minus 1200. Okay. So when you will write height of 5,000 meter above the sea level, na, write this 5,000 in a plus way and write this 1200 in a minus way because it's below the sea level. Okay. And then solve it. You will get the answer as 6,200 meter. Now let's switch to the next question. Mohan deposits rupees 2,000 in his bank account and withdraws rupees 1642. So मोहन ने जो है मनी डिपॉजिट किया बैंक में 2000 रुपीज. डिपॉजिट किया मीन्स इट्स अ पॉजिटिव नंबर. विथड्रॉ निकाल लेना मीन्स इट्स अ नेगेटिव नंबर. So what you will write, Mohan deposited amount in bank equals to rupees 2000 plus का rupees 2000. Mohan withdraws amount equals to minus का rupees 1642. Withdraw means निकाल लेना, that is negative. Deposit means जमा करना, that is positive. Now after that, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, they are also saying the same thing. Withdrawal जो है we are representing with negative. हमने पहले ही negative से represent कर दिया उसको. They are saying the same thing here. Then how will you represent the amount deposited? तो amount deposited को कैसे represent करोगे? With positive number, right? So what they are saying here, अगर विड्रॉल अमाउंट को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिपॉजिटेड अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, यू विल राइट पॉजिटिव इंटीजर, the answer of the first line. Then after this it's written find the balance in Mohan's account after the withdrawal. So अब आपको बैलेंस फाइंड आउट करना है. ओके, सो बैलेंस कैसे निकालेंगे हम? इतना आपने, सपोज एक एग्जांपल इफ आई गिव यू, आपने 10 रुपए बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किया और आपने 4 रुपए निकाल लिए, तो अब आपके पास बैंक में कितना पैसा बच गया?
सो 6 रुपीज आपका बच गया। तो ये 6 आया कैसे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे। सो यू विल राइट डिपॉजिटेड अमाउंट प्लस 2000, विड्रॉल अमाउंट माइनस रुपीज 1642, देन द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट इक्वल्स टू 2000 minus, you will write plus in between then minus, like this. Why we are doing like this? क्योंकि हमें करना सब्ट्रैक्ट ही है, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है इस वजह से। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये साइन हम रिमूव करेंगे प्लस माइनस, ये माइनस ही बन जाएगा, राइट। सो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है वो। सो 2000 माइनस 1642 वी विल डू हियर, और हमारा आंसर आएगा 358 रुपीज। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ द 5th क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सब्ट्रैक्शन करना है, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करनी है पहले, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। नाउ लेट्स मूव टू द 6th क्वेश्चन। रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। लेट मी डिस्क्राइब द डायरेक्शंस टू यू। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ओके, so if you just check out here, this is north, this is south, this is east, and this is west. You can check this number line as well. Now Rita goes 20 kilometer towards east from point A to B. So यहाँ से लेकर यहाँ तक रीटा जो है ईस्ट की तरफ गई 20 किलोमीटर. So this distance from A to B is 20. Now from B से she moves 30 kilometer towards west. अब यहाँ B से वो जो है यहाँ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है. कितना? 30 किलोमीटर. सो व्हेन शी विल गो टुवर्ड्स वेस्ट, तो 20 तो ये कवर ही कर लिया, बाकी और थोड़ा सा कवर करेगी, यहाँ तक वो 30 पहुंच गई. सो दिस टोटल इज 30 किलोमीटर शी इज कवरिंग व्हेन शी इज मूविंग फ्रॉम बी टू एनी अदर पॉइंट, लेट्स नेम इट एज सी, टुवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, जब वो ए से बी गई टुवर्ड्स ईस्ट, तो उसने जो है 20 किलोमीटर कवर किया, और जब वो ईस्ट से वेस्ट आई तो उसने 30 किलोमीटर कवर किया. Now what the question is saying, if the distance towards east is represented by a positive integer, अगर ईस्ट की तरफ वाला जो है ये वाला हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, then how will you represent the distance traveled towards west? मतलब 30 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो मतलब क्या हुआ, जब वो इस तरफ जा रही है तो हम प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब वो इस तरफ जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली नेगेटिव से, बिकॉज इट्स अनदर डायरेक्शन. सो व्हेन द डायरेक्शंस आर चेंजिंग, so mathematical operations also change, like plus would become minus and minus would become plus. So if towards east is positive, then towards west would be negative. So the answer of this part would be the distance traveled towards west would be represented by a negative integer. Now the next part they are asking is, by which integer will you represent her final position from A? So किस integer से उसकी final position A को represent किया जाएगा? Means 30 उधर गया तो इट्स -30, राइट. सो नाउ ये हमें एक्चुअल में निकालना है. सो हाउ यू विल फाइंड आउट -30 and +20, this would be -10. So the by which integer will you represent our final position from A? Final position was this, or from A is this. तो ये कितना आ गया? -10. So this would be -10 kilometers. Okay. Basically 10 kilometer it is, and we are representing it with negative sign because it's moving towards west. So this is about question number 6. I hope this is also clear. If any doubts, you may ask me by writing in the comment section as well. So let's come to the next question. Question number 7. In a magic square, each row, each column, each diagonal have the same sum. So they are saying 2 parts they are giving, और इनमें से दे आर आस्किंग चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर. फर्स्ट वाला मैजिक स्क्वायर है या सेकंड वाला मैजिक स्क्वायर है? कैसे पता चलेगा? अगर हर एक रो का, हर एक कॉलम का, हर एक डायगोनल का आंसर सेम आता है, सम मतलब एडिशन सेम आता है, दैट मीन्स इट्स अ मैजिक स्क्वायर. सो रो और कॉलम और डायगोनल होते क्या है? रो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. कॉलम्स क्या होते हैं हमारे? कॉलम्स वर्टिकली होते हैं दिस वे. ठीक है, तो ये हमारे कॉलम्स है 3. एंड डायगोनल्स, व्हाट आर डायगोनल्स? बेसिकली डायगोनल्स हमारे इस तरह से होते हैं, ये हमारा पहला डायगोनल है, ये हमारा दूसरा डायगोनल है. ठीक है, दे आर द डायगोनल. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट
rows first of all. So let me represent the diagonals like this so that the numbers also would be equal to you. Okay. So first we will talk about the row. So row 1, we will add all the three numbers here. So row 1 sum is equals to 5 minus 1 minus 4, and that is 0. Then row 2 is minus 5 minus 2 is minus 7 plus 7, 0. Row 3 sum is 0 plus 3 minus 3, that is again 0. So sum of all the three rows is 0. Let's check the columns as well. 5 minus 5, 0 plus 0, 0 again. Okay, I'll write this with the red color so that you can identify like we are talking about column here. Okay, so column 0. Now minus 1 plus, sorry, minus 1 minus 2, minus 3 plus 3, 0. Minus 4 plus 7, this would be 3. 3 minus 3, 0. Okay, column ka sum bhi is coming 0. Now let's check the diagonal also. In the case of diagonal, we'll check this diagonal first of all. So 5 minus 2 minus 3. So this is minus 5. 5 minus 5, 0. This is also coming 0. Let's check this diagonal now. Okay. So 0 minus 2 minus 4. This is minus 6. 0 minus 6 is minus 6. So this diagonal is not giving the sum as 0. So that's why this first part is not a magic square. It's not a magic square here. So we will write first part is not a magic square because the one of the diagonal is not giving the sum as 0. The reason would be one of the diagonal is not giving the sum as 0. Now let's move to the next part, B part here. Okay. Now in this B part, we'll check the rows first of all. First row, 1 minus 10 is minus 9. Minus 9 plus 0 is minus 9. Minus 4 minus 3 minus 7. Minus 7 minus 2 is minus 9. Minus 6 plus 4 minus 2. Minus 2 minus 7 minus 9. You solve it and then check the answers. Okay. Now let's check the columns here. So columns ke case mein we will do 1 minus 4 minus 6. So 1 minus 4 is minus 3. Minus 3 minus 6 is minus 9. Second column, minus 10 minus 3 is minus 13. Minus 13 plus 4 is minus 9. 0 minus 2 is minus 2. Minus 2 minus 7 is minus 9. So अभी तक सबका सम minus 9 आ रहा है. Let's see the diagonal this time. So diagonal की बात जब हम करेंगे, so 1 minus 3 और minus 7. So 1 minus 3 is minus 2. Minus 2 minus 7 is minus 9. So this diagonal is also giving minus 9. Let's check the last diagonal. 0 minus 3 is minus 3. Minus 3 minus 6 is minus 9. So this diagonal is also giving minus 9. So this second part is a magic square because the sum of each row, column and diagonal are giving the same answer as minus 9. This would be the reason. Now let's switch to question number 8. Question number 8 is saying verify. So you have to do the verification of what? Verification of this LHS and verification of this RHS. If the answers would come same, that means we can say hence verified. So we'll check the answers in this case. So let's see. We are having the values of A. In the first part, you may check out. The value of A is 21 and B is 18. So we'll take LHS first of all. LHS is A minus minus B. So we'll just put the values here. A is 21, 21 minus B. So we'll write this minus first of all. Now B is 18. Now we know minus minus is plus. So 21 plus 18 and this would give us the answer as 39. This is LHS. Now we will do RHS. RHS is A plus B. We will write A plus B here. A is 21 plus B is 18. And this is also giving us 39. So when LHS and RHS are same, you will write LHS equals to RHS, hence verified. So that means first part is correct. Now we will prove second, third and fourth part. So let's switch to the second part now. So I'll just replace the digits here. Okay. Rest of the things are same. Okay. So we'll write the digits here. So the digits in the second part are A is 118. This is minus was removed earlier. I'll just write a negative with a black color here. Okay. Now the B value is 125 in this case. So my 118 plus
125. So how much the answer you will get? You have to add both the numbers basically 118 and 125. So quickly tell me what answer you will get after addition. Yes, it would be 243. Let's check the RHS now. A is 118, B is 125. So in each and every case now you will get the same answer because it's asking to verify. So in verification now every time you will get the same answer only. Okay. So let's see the third part now. So I'll just erase the digits again. Okay, it's just removed. Okay. Now let's take the values here. Third part. A is 75 minus 84. Same way we will do 75 plus 84. And this would give us the answer as 159. Same way you will write here as well. 75 plus 84, 159, LHS, RHS equal, hence verified. Now the last part. In the case of last part, this is okay. Last part is 28 and 11. So this is 28, this is 11. So 28 plus 11, that would be 39. Because 28 plus 11, if you will do, it would give you 39. Here also 28 plus 11, 39. We are just putting the values of A and B. Okay, so this is complete question number 8. Let's switch to question number 9 this time. So in question number 9, they are asking to put the appropriate sign. What appropriate sign? Either this, or this. Okay. Now use the sign in the box to make the statement true. So what we will do now, we'll just check out the calculation here first of all. So let's see the A part. We'll solve it. We'll solve the right side also. Then we will compare which one is bigger. So if we'll solve the A part left side, this would be minus 8 minus 4. Because plus minus is minus and that is minus 12. If you solve the right side, this is minus 8 plus 4 and that is minus 4. So if you compare minus 12 and minus 4 is bigger. So this sign would appear over here. Same B part will solve. This is minus 3 plus 7 minus 19. So minus 3 plus 7 is 4. 4 minus 19 means what you have to do, you have to subtract 4 from 19. You will get 15. And the 19 is a bigger number, so that means it is minus 15. Okay. So now right side. 15 minus 8 and plus minus is minus here. Now solve it. 15 minus 8 is 7. 7 minus 9 is minus 2. Now which one is bigger? Minus 15 or minus 2? Obviously minus 2. So we'll put the symbol like this again. C part. Okay. In the C part, 23 minus 41 plus 11. So 23 minus 41 would be minus 18 plus 11. So minus 18 plus 11 would be minus 7. Okay. Now right side, 23 minus 41, again it's same, right? 23 minus 41, it's minus 18. Now instead of plus 11, it's minus 11. So here we will add because two same signs are there. So this would be 29. Okay, because 18 plus 11 is 29 and the negative 18 is negative, so that's why negative answer. So minus 7 or minus 29, which is greater? Minus 7 is greater. We'll put the symbol like this. Let's do the D part this time. So in the case of D part, we are having 39 plus minus would become minus, and here it's again minus. So 39 minus 24 minus 15. So 39 minus 24 is 15 and 15 minus 15 is 0. So this is 0 basically. Okay. Now right side. 36 minus 52, because plus minus is minus and minus minus plus. So 36 minus 52 plus 36. So you can do in two ways basically. First way is 36 minus 52 you can solve. So if you will do so, 36 minus 52, it would give you minus 16 plus 36. Second way is add 36 and 36 and then subtract 52. So both the ways are correct. So now 36 minus 16 would be 20. So this is 0
This is 20. So 20 is greater. We put the symbol like this. Now the last part is minus 231 plus 79 plus 51. So let's add these two numbers first of all. 79 plus 51 will get 130. So this is minus 231 plus 130. Now if you will subtract it, 231 में से 130 will get 101. 231 is bigger, so answer would be minus 101. Now right side, let's add these two first of all because both are positive numbers. So any way you may do, it's up to you how you want to solve. So this is 240. Okay, so this would be minus 399 plus 240. And when you will subtract 399 and 240, we'll get the answer as 159. But it would be negative because minus 399 is negative, which is greater. So now if you compare both, so minus 101 is greater than minus 159. So this would be the representation. So this is question number 9. I hope till here each and every question is clear. If still you are having doubt, please ask in the comment box. So let's move to the question number 10 this time. Question number 10. So what question number 10 is saying, a water tank has steps inside it. So this is a water tank और इसके अंदर देखो यहाँ पर steps बने हुए हैं, ठीक है? Now a monkey is sitting on the topmost step. So यहाँ पर जो है हमारा monkey जो है बैठा हुआ है, that is the first step. The water level is at the 9th step. So जो water level है वो जो है 9th step पे है नीचे. He jumps 3 steps down. First part, let's solve this. He jumps 3 steps down. तो monkey जो है 3 step पहले नीचे jump करता है, फिर उसके बाद and jumps back 2 steps up. और फिर उसके बाद 2 स्टेप ऊपर आ जाता है. तो पहले वो 3 स्टेप्स नीचे जा रहा है, 3 steps down and then 2 steps up. So जब down हम जा रहे हैं, that means we are going in a negative way. Because जब आप लिफ्ट में बेसमेंट में जाते हैं तो -1 -2 इस तरह से प्रेस करते हैं, और जब हम ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे तो +1 +2 प्रेस करते हैं. जब वो मंकी नीचे जा रहा है दैट मीन्स इट्स नेगेटिव, और जब मंकी ऊपर जा रहा है दैट मीन्स इट्स पॉजिटिव. सो जब हम 3 स्टेप्स डाउन लेंगे वी विल टेक -3 एंड व्हेन वी विल टेक 2 स्टेप्स अप वी विल टेक +2. ओके, नाउ पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल. तो वाटर लेवल कौन से स्टेप पे था, 9th स्टेप पे था, ठीक है. तो इसका मतलब जब वो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा दैट मीन्स दैट नंबर ऑफ जंप्स द मंकी इज टेकिंग. तो करना कैसे है इसको, लेट्स विजुअलाइज. So for solving this, we'll make a table like this, and in this column we will write jump. Like we will just check out how many jumps the monkey is taking basically, and here we will write total steps moved. Total steps moved, and here we will write current position. Current position means अभी jump करने के बाद monkey कहाँ पर है, current position. Okay, so now we will start it from the beginning. So जब jump करना उसने start किया तो वो कौन से step पे था, he was at the first step. Okay, इसके बाद से अब हम jumping start करेंगे. तो jumping कैसे हो रहा था, जब उसने first jump ली, like when he is taking first jump. तो first jump उसने कौन से ली थी, 3 steps down की, 3 steps down. तो यहाँ पर कौन से स्टेप पे पहुंच के जब वो 3 स्टेप नीचे आया, अभी वो फर्स्ट सीढ़ी पे है, 3 स्टेप नीचे आ गया, इसका मतलब वो 4th स्टेप पे आ गया. तो नाउ इन द फर्स्ट जंप ही इज एट द 4th स्टेप. अब सेकंड जंप में वो कहाँ पर आ जाएगा, सेकंड जंप में उसने 2 स्टेप्स अप लिए थे. तो 2 स्टेप्स अप, 2 स्टेप्स अप लिए मतलब 4th स्टेप से 2 स्टेप ऊपर चला गया, तो सेकंड स्टेप पे आ गया, राइट. So monkey would reach on the second step now. Third jump में monkey आ जाएगा, फिर से 3 step नीचे लेगा. Means what monkey is doing ना, he is taking 3 steps down and then 2 steps up continuously till the time he'll reach at the water level. So फिर से वो 3 steps down he is taking, 3 steps down. That means second step पे है, अब वो 3 step नीचे आया तो वो आ गया 5th step पे. Now fourth jump में 2 steps अप गया, 2 steps अप किया मतलब 5th स्टेप पे है, 2 स्टेप ऊपर चला गया, तो monkey would reach at 3rd step. तो ये हमें तब तक चलाते रहना जब तक 9th स्टेप नहीं आता. Now fifth jump में again 3 steps down,
3 steps down मतलब थर्ड स्टेप पे है, 3 स्टेप नीचे आ गया, he'll move to the 6th step now. Now sixth jump में फिर से 2 steps up. 2 steps up means 6 steps से 2 step ऊपर चला गया, 4th step. Now 7th jump, again 3 steps down. 4th step पे है, 3 step नीचे आया, so he reached at 7th step. Now 8th jump, again 2 steps up. 7th step पर है, 2 step ऊपर गया, so he will reach at 5th step. 9th jump, again 3 steps down. तो 5th step से 3 step नीचे गया, he'll reach at 8th step. 10th jump, 2 steps up. 8 step से 2 step ऊपर गया, he will reach at 6th step. 11th jump, 3 steps down. Again 6 step से 3 step नीचे गया, he'll reach at 9th step. So now 9th step means he reached at the water level. So in the first part they are asking how many jumps monkey is taking to reach at the water level. So you can check out here how many jumps he is taking. 11 jumps. So answer of the first part would be 11 jumps, and you have to show this table. Okay. So this is what you have to write in the first part. Let's switch to the second part now. In second part, again we have to make a table. First I'll show you the question again, what they are asking basically in the second part. So let's have a look. Now you may check out the second step here. After drinking water, तो अब वो 9th step पे पहुंच गया पानी के पास. Now he'll drink water and now he wants to go back. अब फिर से वो अपनी पोजीशन पे वापस जाना चाहता है. Now for this he jumps 4 steps up. अब वो नीचे से जो है फिर से ऊपर आना शुरू करेगा. 4 steps ऊपर आएगा पहले, 4 steps up. Up means ऊपर आ रहे हैं हम +4 and then jumps back 2 steps down और फिर नीचे जाएगा 2 steps. तो पहले वो 4 steps up लेगा, फिर 2 steps नीचे लेगा. ठीक है. So this procedure would carry out continuously कब तक, जब तक कि वो first step पे नहीं आ जाता. So we'll make the table again. So let's have a look how we will make this table now. Again we will make the table. Here we will write jump. Here we will write total steps moved, how many steps he is moving, and then current position. Okay, current position where the monkey is. Now he'll start from where? From the 9th step this time. Okay, because monkey is going from 9th step to the first step. तो हम इसको stop करेंगे जब first step आ जाएगा. Now first jump. When monkey would take first jump, what he is doing basically is taking 4 steps up. So 4 steps up means 9th step पे है, 4 steps ऊपर गया means he will reach to the 5th step. Now in the second jump, he is taking 2 steps down. 2 steps down. 5th step पे है, 2 step नीचे आ गया means 7th step पे आ गया. Right? Okay. Third jump. Third jump again 4 steps up. तो 7th step पे है, 4 step ऊपर गया तो पहुंच गया 3rd step पे. 7 minus 4 3. Okay. Fourth jump. Fourth jump में फिर से again 2 steps down. तो 2 steps down जब हुआ तो 3rd step से नीचे 2 step आ गया means 5th step पे आ गया. ठीक है. He is on 5th step now. 5th jump. 5th jump again 4 steps up. 4 steps up means 5th step पे है और 4 steps ऊपर चला गया. तो 4 step ऊपर चला गया means first step पे पहुंच गया. 5 minus 4, right? Okay. तो first step पे आ गए. तो ये हमारे जो है steps follow हुए. अब second part was asking how many jumps he is taking to reach back. So how many jumps he is taking? You can check out 5 jumps. The answer of the second part would be 5 jumps. I hope this is also clear. Let's see the third part now.
I'll show the question again so that you can relate the third part now. Okay, just a second. Third part, if the number of steps moved down is represented by a negative integer. So what they are saying, when the monkey is going down, they are representing the number with negative. So we'll just relate this third part with this first part basically. Okay, how? Let's see. And the number of steps moved up. So जब वो ऊपर जा रहा है, it's represented with positive integer. Now represent his moves in part 1 and part 2. See, they are saying represent his moves in part 1. So in part 1, down जा रहा था वो 3 steps down. Down means negative. So 3 we will consider as -3 and up means positive. So 2 steps up we will consider as +2. So 3 को will consider as -3, 2 को we will consider as +2. And you have to follow this procedure and find out the answer. In A part, the sum -8 represents going down by 8 steps. So let's see whether it's showing -8 or not. Okay, we'll verify this. So, and in second part, what they are saying? Sum 8. So first part में जो है -8 आना चाहिए हमारा आंसर और second part में 8 आना चाहिए. ठीक है? So second part में हम क्या करेंगे? First part में 3 steps को -3 लेना है, 2 steps को +2 लेना है. Second part में 4 steps up मतलब up मतलब प्लस था. तो 4 steps up means +4 और 2 steps down मतलब -2. ठीक है? तो सेकंड पार्ट में हम 4 को प्लस लेंगे, 2 को माइनस लेंगे और फर्स्ट पार्ट में 3 को माइनस लेंगे, 2 को प्लस लेंगे. बस आपको ये ध्यान रखना है, अप को प्लस लेना है, डाउन को माइनस लेना है. और फर्स्ट पार्ट का आंसर -8 आना चाहिए, सेकंड पार्ट का आंसर 8 आना चाहिए. सो लेट्स सी वेदर इट्स कमिंग और नॉट. सो आई विल जस्ट शो दैट टेबल अगेन सो दैट यू कैन रिलेट. Let's check out over here. So if you just compare 3 steps down, I told you, I'll write here as well. Down means you have to write negative. Up means you have to write positive. So down. So 3 ko will write -3 basically. 3 steps down means -3. 2 steps up means +2. Okay. So now in the first jump it's -3. Second jump में -3 and +2. So पहले वाला नंबर है उसमें ये add on करते चले जाएंगे. ठीक है. पहले वाला नंबर was -3 और दूसरा वाला नंबर है +2 because up means plus. तो -3 + 2 would be -1. अब ये आंसर आ गया -1. इसमें हम ये वाला स्टेप थर्ड स्टेप ऐड करेंगे. तो -1 और डाउन मतलब -3 तो -4. -4 2 स्टेप अप मतलब +2. -4 + 2 इज -2. अब इस आंसर में फिर से 3 स्टेप्स डाउन मतलब -3. ये आ गया -5. -5 यहाँ लिखेंगे एंड 2 स्टेप्स अप मीन्स +2. इट वुड बी -3. -3 में अब हम इसको देखेंगे 3 स्टेप्स डाउन मीन्स अगेन -3. -6. अब -6 में 2 steps up means +2. It would be -4. अब -4 में फिर से 3 steps down. So -4 -3 is -7. अब -7 में 2 steps up. So -7 + 2 is -5. अब -5 में 3 steps down again. So -5 -3 is -8. See, answer is coming -8 and this is what they were saying. So this is done. So जब आप ये टेबल बनाएंगे ना, यहाँ पर गैप देना है और ये टोटल स्टेप्स मूव जो है ये वाला पार्ट है जो मैंने अभी रेड कलर से किया है. ठीक है. तो आपको इस तरह से ही लिखना है टोटल स्टेप्स मूव के नीचे, इसी तरह से टेबल बनाना प्रॉपर्ली. ओके. नाउ लेट्स कंपेयर द सेकंड पार्ट टेबल. नाउ जस्ट चेक आउट वेदर इट्स शोइंग 8 और नॉट. नाउ दिस वाज आवर टेबल. सो अप के केस में वी हैव टू टेक पॉजिटिव और डाउन के केस में वी हैव टू टेक नेगेटिव. ठीक है. तो 4 स्टेप्स अप मींस +4 और 4 यू मे राइट. ठीक है. So let's write this as 4. 4 steps up means +4. Now इस 4 में हम जो है ये add on करते जाएंगे जिससे भी पहले किया था. 4 down मतलब -2. So 4 - 2 is 2. अब इस 2 में फिर से इसको करेंगे. 4 steps up means +4. So 2 + 4 6. 6 में 2 step down means -2. 4. अब इस 4 में 4 step up means +4. 4 + 4 is 8. So see, answer is coming as 8 here. So it is correct. ठीक है. तो इसी तरह से इसके भी टेबल बनाएंगे. So this is the answer of this particular question. So this was about exercise 1.1. I hope this is clear. Let's switch to exercise 1.2 now. Exercise 1.2.
क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7. तो व्हाट यू हैव टू डू हियर ना, आपको दो कोई भी ऐसे इंटीजर लेने हैं ऑफ योर ओन चॉइस, ऐसे दो इंटीजर जिनको आपको ऐड करने पे -7 आंसर मिले। तो जैसे सपोज मैंने दो इंटीजर्स ले लिए -10 और 3। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ -10 + 3, तो मुझे -7 आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी चॉइस से कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हैं जिसका सम जो है -7 आएगा। ठीक है। नाउ राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference is -10. अब ऐसे दो इंटीजर्स लेने हैं जिनको माइनस करने पे उसका आंसर -10 आए। ठीक है, तो आपको इस तरह का इंटीजर चूज करना है। तो सपोज अगर हम चूज कर लेते हैं, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना -10 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं चूज करती हूँ -5 और 5, तो अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो -5 दिस इज गिविंग अस -10। और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कोई भी दो इंटीजर्स ले सकते हो, बट जो डिफरेंस है वो -10 आना चाहिए। इस केस में -7 सम आना चाहिए। तो एनी टू इंटीजर्स यू मे टेक ऑफ योर ओन चॉइस। आंसर एक नहीं होगा इसमें, आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो पूछा गया है वो रिजल्ट निकलना चाहिए। प्लस जो है -7 देना चाहिए एडिशन, और बी पार्ट में सब्ट्रैक्शन -10 आंसर देना चाहिए। नाउ सी पार्ट इज अगेन यू हैव टू टेक पेयर ऑफ इंटीजर्स whose सम इज 0। तो ऐसे दो इंटीजर जिनको हम ऐड करेंगे तो आंसर 0 आए। तो यू टेक एनी टू सेम नंबर्स, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, दैट वुड गिव यू 0 आंसर। so you may take -2 और 2, because जब आप इनको प्लस करेंगे -2 + 2 that would give you 0. so what you will write, any one pair you have to write in each and every case. ठीक है, it's not like you have to write many, just a one pair only. so you will write this pair of your or other pair also of your own choice, this pair and this pair. ठीक है, now let's switch to the next question number 2. write a pair of negative integers. अब इस केस में हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं, पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ओनली। फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर ऑफ इंटीजर्स था, मतलब आप नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हो, आप पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हो, आप जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, बट सेकंड क्वेश्चन में दे आर सेइंग राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। कैसे इंटीजर्स लेने हैं, whose difference gives 8, मतलब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 8 -10 and -2 we can take. ओके, तो आप इस केस में क्या सोचना ना, आप ऐसे सोचना कि ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस करने पे बड़ा नंबर आए। ओके, तो तभी हम उसको जो है आंसर निकाल सकते हैं। अब आप इनको डिफरेंस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, सी हियर, -10 -2। तो दोनों मैंने नेगेटिव इंटीजर्स लिए हैं, अब हम इनका डिफरेंस कर रहे हैं। तो -10, दिस माइनस माइनस वुड बिकम प्लस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस वुड बिकम माइनस, 10 में से 2 गए 8 और 10 नेगेटिव है तो आंसर वुड बी -8। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आप रिलेट कर सकते हैं, एक यहाँ पर इनकरेक्ट चीज हुई है, व्हाट वी आर डूइंग इनकरेक्ट थिंग बेसिकली। ऑप्शंस हमारे ठीक है, -10 और -2। ये मैंने आपको इससे करके दिखाया जिससे आपको आइडिया लगे कि आप पेपर में इस तरह से नहीं करें। तो -10 और -2 हमने बिल्कुल ठीक नंबर लिए हैं, बट वे ऑफ राइटिंग इज नॉट करेक्ट। तो अगर आप -10 पहले लिखते हैं तो आंसर आ रहा है -8। तो हमें करना क्या है, बेसिकली हमें -2 पहले लिखना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, -2 -10। So now we will write -2 + 10 और this would give you the answer as +8। तो आपको सोचना इस तरह से, दो नेगेटिव इंटीजर जिनको माइनस करने पे 8 आंसर आए। तो आपको नेगेटिव लेने हैं, बट जो बड़ा नंबर रहेगा प्लस होने के बाद वो आपको राइट साइड रखना है, क्योंकि आंसर जो है पॉजिटिव वे में है। अगर होता -8 आंसर चाहिए तो जो पहले किया था वही फॉलो करना है। तो इस केस में पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -2, -10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, और सॉल्व करके दिखा देंगे जैसे मैंने अभी आपको यहाँ राइट साइड में करके दिखाया है। नाउ बी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको दो इंटीजर लेने हैं, वन शुड बी नेगेटिव एंड अनदर शुड बी पॉजिटिव। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कैसे लेने हैं, जिसका सम इज -5, मतलब दोनों को ऐड करने पे हमें जो है -5 आंसर मिले। तो एक नेगेटिव ले लेते हैं -6, एक पॉजिटिव ले लेते हैं 1, दोनों को ऐड कर देते हैं, -6
plus 1, it would give you minus 5. So you may write the pair as minus 6, 1 and then show it by solving. आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, but आंसर ठीक निकलना चाहिए. Now the C part is write a negative integer and a positive integer. Again एक negative लेना है, एक positive लेना है. अब कैसे लेने हैं जिनका डिफरेंस जो है आपको -3 दे. ऊपर क्या था, सम जो है -5 दे रहा था. Now in this case the difference should be -3. तो एक नेगेटिव लेना है, एक पॉजिटिव लेना है, बट डिफरेंस जो है वो -3 होना चाहिए. तो we will take the numbers like -1 एक नेगेटिव ले लिया और एक पॉजिटिव ले लिया हमने 2. तो जब हम इनको माइनस करेंगे विल सब्ट्रैक्ट बोथ. डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन. तो -1 -2 दिस इज गिविंग अस -3 which they are asking. तो ये हमारा पेयर हो जाएगा -1, 2 which is giving the answer as -3. तो इस तरह से आपको पेयर लिखना है पहले और फिर उसको सॉल्व करके दिखा देना है. यू मे टेक एनी पेयर ऑफ योर ओन चॉइस, बट आंसर ठीक आना चाहिए. तो यहाँ पर आंसर ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर बनेगा हर केस में. आंसर्स कैन बी मैनी, बट आपके जो इंटीजर्स लेने का तरीका है दैट शुड बी करेक्ट, सो दैट whatever the question is demanding as the answer that would fulfill over there. Now the next question number 3. Let's switch to this one. In a quiz, team A scored these many marks. मतलब team A के जो है -40, 10 and 0 आया है, and team B scored 10, 0 and -40. team B का जो है 10, 0 और -40 स्कोर आया है इन 3 सक्सेसिव राउंड. सक्सेसिव का मींस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक के बाद एक राउंड हुए हैं क्विज में. तो टीम ए ने जो है फर्स्ट राउंड में -40 स्कोर किया. इन द सेकंड राउंड टीम ए इज स्कोरिंग 10 मार्क्स एंड इन द थर्ड राउंड टीम ए इज स्कोरिंग 0 मार्क्स. सिमिलरली टीम बी इज स्कोरिंग 10 मार्क्स इन द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड 0 मार्क्स, थर्ड राउंड -40 मार्क्स. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, व्हिच टीम स्कोर्ड मोर. तो कौन सी टीम ने जो है ज्यादा स्कोर किया है. सो विच टीम स्कोर्ड मोर. तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल स्कोर ऑफ बोथ द टीम्स. सो हाउ यू विल राइट, टीम ए स्कोर इक्वल्स टू -40 plus 10 plus 0. If you will solve it, you will get the answer as -30 plus 0, and that is -30. Now team B score. So you will write the heading as team A score and then team B score. So team B score would be 10 plus 0 minus 40. Okay, we are adding all. So how you will write it? We'll write the third term like this. Plus -40 because we are adding all three, and 40 is negative. That's why we are putting it in bracket. Now 10 plus 0 is 10. Plus minus will become minus. So 10 minus 40 is -30. So now what they are saying, which team scored more? But दोनों के आंसर हमारे -30 आ रहे हैं. That means both the teams are same. So both teams scored same. You will write this answer. Both teams scored same. Now next part they are saying as, can we say that we can add integers in any order? Yes, we can add integers in any order. If you will. Okay, so the answer of this would be both teams scored the same, because the answer is coming -30 in both the cases, team A and team B. Now the next part they are asking is, can we say that we can add integers in any order? So yes, we can add integers in any order, because you can check out when we were adding -40, 10 and 0, then also we were getting -30. And when we were changing the order of all three scores like 10, 0 and -40, then also we were getting the same answer. So what you will write here, score of both the teams are same, that is -30. And yes, we can say that we can add integers in any order. So this would be the answer of the question number 3. Let's switch to the last question of this exercise. Question number 4, fill in the blanks to make the following statements true. So true karna hai means you have to check out which integer you have to write here so that the answer would appear same. Okay? So what we will write, -5 plus dash and -8 plus dash. So whatever number is written here, we will write this here. And whatever number is written here, we will write this here. Why we are doing so? Just check out. -5 -8 plus minus is minus, right? So -5 -8 is -13. Now if you check this part, -8 plus minus is minus, -8 -5 is -13. So both are same. So in these type of things now, on the right side, whatever integer is written, write it on the left side, and left side integer write on the right side. Now the second part,
what we will add in this number so that we'll get the number itself. So in this case, we'll add 0. Number plus 0 gives us the number itself. 17 plus dash gives us 0. This is additive inverse. 17 में क्या add करे कि 0 आ जाए? It's additive inverse, that is minus 17. 13 minus 12. Here we are having two numbers, 13 and minus 12. दो numbers हमें left side से मिल गए, and the right side we are having minus 12 और minus 7. तो आप देखो एक नंबर तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यहाँ पर minus 7 है, यहाँ पर minus 7 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा minus 7. और अब यहाँ आप चेक करो तो minus 12 और minus 7 है, क्या नहीं है? 13 नहीं है. So here we will write 13. तो इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट जो मिसिंग है वो आपको लिखना है. That would give you the same answer. Okay, next part, fifth part. फिर से हम उसी तरह से चेक करेंगे. -4 और -3, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 15 है. So what we will write here? 15 because -4 -3. See here what it is basically. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो -4 plus 15 and plus minus is -3. So -4 -3 -7 and plus 15, that would give you 8. So left side is giving us the answer as 8. Now see the right side. It's -4 plus 15 and plus minus is -3. Now if you solve it, it would also give you 8. तो दोनों आंसर्स हमारे सेम आ रहे हैं. तो करा क्या एक्चुअल में मैंने यहाँ पर कैसे लिखे ये नंबर्स. तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट था उसी तरह से हमने देखा. तो इसमें आपने यहाँ पर हमारा लेफ्ट साइड में जो है -4 और -3 है, राइट साइड में 15 है, दोनों में से कुछ भी नहीं है. इसका मतलब जो तीसरा नंबर है वो 15 ही है. तो यहाँ पर हमने 15 लिख दिया. अब यहाँ पर दो नंबर्स का गैप है, मीन्स दो नंबर्स मिसिंग है जो कि लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं. तो उन्हीं दो नंबर्स को हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है. So we'll write these two numbers here. So this would be the answer of this question number 4. I hope everything is clear related to exercise 1.1 and 1.2. If still you are having doubt, you may ask me by writing in the comment box. So if you are liking my video, do like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Have a nice day.